Hello everyone, welcome back. I am Aprajita and in this channel I post videos related to art and craft, and today I am going to paint a pot. So let's get right into the video. तो सबसे पहले हमें लेना है एक पॉट। यहाँ पर मैंने क्ले पॉट का यूज़ किया है और उसके ऊपर अच्छी तरह से जेसो अप्लाई कर दिया है। And in today's video I am going to play with different colors, different shades, और मैंने ये सारे डिफरेंट शेड्स बनाए हैं सिर्फ प्राइमरी कलर्स एंड वाइट कलर को मिक्स करके। सो कीप वॉचिंग एंड लर्न विद फन। ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द ईजीएस्ट। यहाँ मैंने सिर्फ कलर्स का यूज़ किया है, कोई भी स्पेसिफिक डिज़ाइन या पैटर्न का यूज़ नहीं किया है, so that कोई भी इसे easily बना सकता है। And here I am mixing red and white color to make this color. And I am just going with the flow. Also, don't forget to check the description box below. If you guys are interested to learn how to make different shades, then please don't forget to check. And you can see how we can use primary colors to create new shades. And I also upload color mixing के short YouTube videos, so you can check that out. And I am not liking this color, so मैं इसे change कर रही हूँ। And now I am adding some patterns. मैं कुछ लीफ के पैटर्न्स ऐड करूँगी। And this is really easy to make. You can use different types of pots like terracotta, plastic pots, clay pots. These are very trendy nowadays. And see how beautiful the pattern is looking. And once that is all done, मैं लास्ट में वार्निश का यूज़ करूँगी, so that जो कलर है वो ख़राब ना हो। You can use this pot as pen stand, pencil stand or brush stand, and it will look more beautiful if you use it as a planter. Anybody can make this type of pots and you can decorate your home. Also, don't forget to subscribe, like and share. And if you like the video, then please comment. So that's it for today's video guys. मिलते हैं मेरे next video में. Till then, bye bye.